And we are entering the very famous part of the city called the Little Venice, due to the numerous various channels and rivers that you will be able to find all around the city. This river's fireplace, it wasn't a fireplace, it was the bathroom, it was the latrine, the toilets, the latrine, that was the medieval name. And only noblemen have the luxury to have their own bathroom inside their houses. आज कोलमार में फर्स्ट डे है क्रिसमस मार्केट का। फाइनली पहुंच चुका हूं कोलमार और बहुत ठंड है। देखिए पूरा फॉग हो चुका है। पता नहीं था क्या करूं तो स्टेशन से बाहर आ रहा था और सामने ही पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे कोलमार की सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी। देखिए आ गया हूँ मैं बोट राइड के लोकेशन पे। See, ladies and gentlemen, obviously we are going to see Colmar. हेलो नमस्कार, बोनजूर, सलाम टू एवरीवन वाचिंग आउट माय ब्लॉग। सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ कोलमार में। स्ट्रासबर्ग से मैंने एक ट्रेन पकड़ ली है, मतलब अभी तक शुरू नहीं हुई ट्रेन। बैठा हूँ ट्रेन के अंदर और शायद आधे घंटे में कोलमार पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ पे एक दिन गुजारूँगा अपना। आज कोलमार में फर्स्ट डे है क्रिसमस मार्केट का। कल मैंने स्ट्रासबर्ग क्रिसमस मार्केट का ब्लॉग बनाया था, वो भी फर्स्ट डे था। अगर आपने वो देखा नहीं हो तो पिछले ब्लॉग को ज़रूर विज़िट कीजिए और देखकर ये ब्लॉग में वापस आइए। और इस ब्लॉग में होगा कोलमार का ट्रैवल और क्रिसमस मार्केट रिलेटेड स्टफ़। और देखते हैं एक दिन में क्या क्या कर पाता हूँ, पता नहीं। अभी आइटिनरी बनाऊंगा ट्रेन में बैठ के और फिर वो सब करूँगा। तो कोई प्लान नहीं है और कोई स्टे नहीं है वहाँ पे, तो पूरा दिन मैं घूमने वाला हूँ, बस घूमने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, सब कुछ। तो जैसे जैसे कुछ मिलते जाएगा वैसे वैसे बनाते जाऊँगा और वीडियो में डालते जाऊँगा। तो हाँ, और बाय द वे अगर आप स्ट्रासबर्ग में आ रहे हो, स्ट्रासबर्ग में तो CTS करके एक ऐप है वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप लोग डे पास ले रहे हो तो वो मत लीजिए, कोई फ़ायदे का नहीं है। 2 यूरो का टिकट आता है गार से, मतलब मेन स्टेशन से सिटी के अंदर जाने के लिए, वो ले लीजिए क्योंकि अंदर सब कुछ पास में ही है। तो उस टिकट की कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। 5 यूरो का डेली पास आता है जो कि बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी वो कुछ काम का नहीं है। मैंने कल लिया था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सब चल के मैंने पूरा स्ट्रासबर्ग घूम लिया और आज सुबह मैंने और एक टिकट लिया क्योंकि वो एक दिन का था, ख़त्म हो गया। आज सुबह इधर मतलब ये गार में आने के लिए वापस एक टिकट लिए। तो ट्रेन शुरू हो गई है बाय द वे और मैं उल्टी जगह पे बैठा हूँ। चलो कोलमार में मिलते हैं, बाय बाय। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं कोलमार और बहुत ठंड है। देखिए पूरा फॉग हो चुका है, 1 डिग्री है यहाँ पे। और घूमते अभी कोलमार, जो कि एक फेरी टेल लैंड बोला जाता है। देखिए इस ट्रेन से मैं आया था अल्साच और 11 बज रहे अभी। जल्दी थोड़ा टाउन घूमता हूँ कोलमार का और देखता हूँ म्यूज़ियम वगैरह। तो जाऊँगा नहीं, यहाँ पे 2 म्यूज़ियम्स है वैसे तो, जो कि बहुत फेमस है। इतने फेमस नहीं है लेकिन कोलमार के लिए वो फेमस लोकेशंस है घूमने के लिए। मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम घूमने का। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर दोनों म्यूज़ियम को विज़िट करना अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट वर्क देखने का तो। क्योंकि एक जो म्यूज़ियम है वो एक इंसान के लाइफ पे बनाया गया है जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिज़ाइन किया था। तो अगर आपको वो इंटरेस्ट है उसकी लाइफ कैसी थी देखने के लिए तो वो म्यूज़ियम बार्टोल्डी ऐसा कुछ है, बार्टोल्डी ऐसा कुछ नाम है।
तो आप अगर इंटरनेट पे डालोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। और एक बड़ा म्यूज़ियम है जिसमें गौतिक कल्चर, गौतिक आर्किटेक्चर ये सब दिखाया गया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर जाना। मैंने इतना इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला नाम वगैरह का, आप ज़रूर सर्च करना, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। वैसे ये लोकेशन देखिए कितना मस्त लग रहा है। और ये पूरा ये फॉग है, फॉग, पॉल्यूशन नहीं है, ये फॉग है। 1 डिग्री टेम्परेचर है कोलमार में और पूरे सिटी में फॉग है। और अभी 11 बज रहे, तो सोचिए जल्द ही दोपहर होने वाली है। तो चलो मैं जाता हूँ घूमने कोलमार, देखता हूँ कुछ टूर वगैरह मिलता है, फ्री टूर, तो घूमता हूँ और आपको दिखाता हूँ। या फिर वाइन टेस्टिंग करने जाता हूँ। यहाँ की वाइन सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, वाइट वाइन। तो चलिए देखते हैं, पता नहीं क्या कर सकता हूँ, घूमते हैं। पता नहीं था क्या करूँ। तो स्टेशन से बाहर आ रहा था और सामने ही पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे कोलमार की सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी। और ये देखिए मुझे वो लोगों ने टूरिस्ट का मैप, कोलमार का क्रिसमस मार्केट, ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी मैं जा रहा हूँ शायद बोट राइड के लिए, अगर वो ओपन होगा तो ज़रूर बोट राइड करेंगे या फिर घूमेंगे। टूरिस्ट मैप वो सब है अपने पास, तो देखते क्या हो सकता है। देखिए आ गया हूँ मैं बोट राइड के लोकेशन पे और ऐसी होने वाली है बोट राइड। ये छोटे छोटे बोट्स है, देखिए। और अभी मेरे बोट राइड के लिए टाइम है, तब तक रुका हूँ। इंग्लिश वाला लिया है, फ्रेंच वाला नहीं। वैसे भी सुनने वाला तो नहीं हूँ, सिर्फ देखने वाला हूँ यहाँ वहाँ। ये देखिए इस बोट राइड की वजह से इस लोकेशन को कहते हैं पेटिट वेनिस, यानी कि लिटिल वेनिस, बिकॉज ऑफ द कनाल। और इसी कनाल में हमारी राइड होने वाली है, शायद वो बोट में ही मैं जाऊँ। See, ladies and gentlemen, obviously we are going to see Colmar, but we are going to see Colmar by the water, and you will have very nice angles to take pictures, and I will talk to you about the history of the city and the particularities of an Alsatian city during history. But first, a few words about security. Please, there is one thing very important. Please be careful to not to keep your hand inside the boat. It's very important because, as you can see right now, we are crossing other boats. We are not alone on the river. So, if you want to keep your fingers, please keep your hand inside the boat. Very important. If you want to get up to take a picture, please, you feel free to do, but just tell me so I stop the engine and no one will fall in the water. So you may have noticed that we just left the city of Colmar and we are now navigating on this little river, on this little swampy area, this little wild area. And the river that we are cruising right now, that we are navigating right now, it's not the Ille River, it's not the same that you have in Strasbourg, it's not the Rhine either, it's a little river called the Lauch. The Lauch in German, the Loch in Alsatian, the Loch in French. And what does that mean? Well, it's quite the same word. It means the leek. The leek, the vegetable. Poireau en français, the leek. Oh, leek. Yeah, and there is a story, a little explanation, a little legend why is it called the leek. Some said that during Middle Ages, here you could only find vegetable fields, gardens, orchards. And one of the gardeners, one day, he drank too much wine and he wanted to fill his boat with crates of leek, with leek crates, and most of them fell in the water. So that's the origin of the name, the leek. If it were cabbages, we could call it the kraut. If it were potatoes, we could call it kartoffel. But it was leek, so Lauch, it is. What is true behind this legend? Well, actually there were gardens, orchards, fields around you everywhere, and the gardeners, they used the same type of boat called barque à fond plat. It's the name in French. It means boat, but very not deep,
It's not very translatable. And they were heading now 1, 2, 3. The gardeners used the same boat, and once there was a field with vegetable, they used to go straight to the marketplace, to the market in the city center of Colmar, to sell the products of their record, their fruits, their vegetables. And if you're familiar with the story of Alsace, you may have noticed that it is parted between France, Germany, France, Germany, Germany again, France again. And why am I telling you this? Because on the left, here on the left, you will have very, very beautiful houses and big houses. Those houses were built by the Kaiser, by the German emperor. That was his name, was his title, the Kaiser, Caesar, Kaiser, Caesar, Kaiser. But it was not the Kaiser himself, the worker to build these houses. And those houses, they were built to attract Germans who had preferred to stay in Prussia, in Bayern, in Sachsen, but to attract them, they used to build these houses. Hello there. Hello. Hello. Hi. Hi. And the Alsatian, they were given two choices. One wants to remain in the region and to become German. Second, to flee the region, to quit the region. If they wishes to stay, to remain French. Most of them, they were poor, so they couldn't afford to live, so they stay and they became German. And the richest, the richer of them, had the opportunity to leave the region and to settle in Paris, for example. And in Paris, they opened restaurants, and in those restaurants, they invented the choucroute, the tarte flambée, the Bekehof. Well, actually, most of the meals that you can taste today, they were not originally from Alsace, but from Paris, by those Alsatians who fled the city, the region, after the annexation in 1870. And now we're entering the city of Colmar. Quite lucky, the mist is lifting, so we have a bit of sun. We can see the blue sky. It's wonderful. Very well. So, from now I can resume the comment, and we are entering the very famous part of the city called the Little Venice, due to the numerous various channels and rivers that you will be able to find all around the city. And I want to talk about a medieval town, a medieval city, not especially Colmar, but all the Holy Roman Empire cities. You would be able to find in a medieval city many people living here. Noblemen, knights, lords, sometimes the king, sometimes the emperor, clergymen, men of the church, bishops, priests, monks, but also what we used to call today commoners. And those commoners you will be able to find peasants and also burghers, bourgeois en français, in French, bourgeois, but in French, in German and in English it's burghers, the inhabitants of the city. And there is a little trick, a little tip how to recognize a nobleman house. Well, actually there are two. I will show you. The yellow house, the yellow building on your left was a nobleman house. And the two ways to recognize it, first it's to spot the coat of arms. If you lift up your head between the two windows, you can see here the coat of arms, the sigil, the emblem. Actually, here it's the emblem of the Knights of St. John, the Order of Malta. So, first, spot the coat of arms. Second, you have to spot this river's chimney, this river's fireplace. It wasn't a fireplace, it was the bathroom, it was the latrine, the toilets, the latrine, that was the medieval name. And only noblemen have the luxury to have their own bathroom inside their houses. So, latrines means nobleman house and coat of arms too. And the burghers, they used to live inside the house that you have in the front of you.
very typical Alsatian houses, and the burghers they used to gather to assemble themselves into guilds, into corporations, and you would be able to find one corporation per profession. For example, the fishermen, for example, the smiths, the bakers, etc., etc. I will not tell you every one of them. Hey there, hey there, hey there. And it is one of the explanations about the colors. Some said that the red referred to the smith, maybe the flame. Some said that the blue referred to the fishermen, maybe the water. Some said the yellow refers to the bakers, maybe the floor. Well, actually, we don't have any proof, so we are not so sure about that. Others said that the colors refer to religions, one color for each religion. But if you remember your history lessons, you may remember that during Middle Ages, during medieval times in Europe, there was only one religion, Catholicism. So, once again, it's not the case. Hello there. Hello. Hello again. Hello. And the reality behind this story is that the paintings are quite recent. They were added during the 70s, so 50, 60 years ago, only to make the houser. तो दोस्तों ऐसा था मेरा बोट राइड का सफ़र, और वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, तो शायद यही एंड है वीडियो का। और एक वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियोस बनते रहेंगे। कोलमार में छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से वो बोट राइड ली थी, ये है लिटिल वेनिस। और चलिए अब नेक्स्ट एडवेंचर को देखते हैं।